हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 33, प्रेमचंद इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड ओवर द वाइडनिंग गल्फ बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। तो ये आउटलाइन समरी हम इसमें करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि MAG 14 है, ये ब्लॉक नंबर 8 है और यूनिट 1 है, जिसमें कि हम बायोग्राफी जो लिखी गई है अमृत राय जी के द्वारा प्रेमचंद उनके फादर की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसके मैंने पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो ये पार्ट 4 है। ओके, नाउ आउटलाइन समरी करते हैं इसकी। प्रेमचंद इन दिल्ली विद जैनेन्द्र कुमार जैन ऑन होली inaugurates the Hindustani Sabha at Jamia Millia, is concerned about the widening gulf between Urdu and Hindi, is persuaded to agree to preside over the Progressive Writers Association, Lucknow, April 1936. His address, an exposition of the element of the true, the good and the beautiful in literature, presides over the Arya Bhasha Sammelan at Lahore, same month. Again speaks of the dire need to bridge the gulf between Urdu and Hindi. Also speaks at the Hindustani Sabha. Takes part in Bharatiya Sahitya Parishad at Nagpur, April 1936, with Gandhi in the chair. Godan is published. Health deteriorates है ना। तो इसमें कमेंट्स आएंगे। दिस चैप्टर गिव्स अ glimpse of, फर्स्ट कमेंट है इसमें, दिस चैप्टर गिव्स अ glimpse of two passionately held convictions of Premchand about a new vision of truth and beauty in literature and about the need to bridge the widening gulf between हिंदी एंड उर्दू। एक तो पहला जो था कि उनका हिंदी और उर्दू में जितना भी एक डिस्टेंस था ना, उसको वो कम करना चाहते थे। और न्यू विज़न था उनका, ट्रुथ, सच्चाई और ब्यूटी के लिए एक न्यू विज़न था। अभी हम काफ़ी ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कीपिंग दिस ओन कमेंट्स ऑन द टू द मिनिमम, अमृत राय लेट्स Premchand's work speak, and what an effective speaker he must have been. Rejecting the narrow idea that beauty lies in the lovely woman out of hand, he suggests an alternative vision of it. मीन्स जो प्रेमचंद जी के देखने का तरीका था ना ब्यूटी को, वो अलग था। आर्ट हैज़ बीन एंड स्टिल इज टेकन टू मीन अ नैरो aestheticism. Its view is not yet wide enough to comprehend the sublime beauty of the battle of life. For it, because it beauty lies in the lovely woman, but not in that plain poor mother of many children who has put her baby to sleep at the edge of the field and is now sweating in toil. If this view of beauty undergoes an enlargement, it will be found that if painted lips and cheeks hide vanity and heartlessness, these parched lips and the tear on these withered cheeks reflect self-sacrifice, reverence and forbearance. तो कितना बताया गया है कि मदर है जिसके बच्चे हैं, है ना, वो अपने बच्चों को सुलाती है और फिर खेतों में काम करती है। या एक ऐसी वुमेन है जो कि लिपस्टिक लगाती है, अपने होंठों का ध्यान रखती है, अपने चीक्स का ध्यान रखती है, वो है। तो ब्यूटी किस में है? ओके, नाउ प्रेमचंद इज इक्वली पैशनेट अबाउट द पैरामाउंट नीड टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी और उर्दू के गल्फ को की दूरियों को दूर करने में। This was a radical vision of truth and beauty that was highly relevant to the hard times that the country was passing through, and that is relevant in some ways even today. The temple of literature, he went on to say, had no place for devotees of wealth and splendor, nor for those who hanker after fame and prestige. The writers were all foot soldiers marching on with the banner of society in our hands. ये बोला गया है, ठीक है। अमृत राय's comment on this radical vision is restrained. This is, वो बोलते हैं कि this is a new balanced vital vision of truth and beauty which was being so clearly expounded here for the first time in this country. Okay, just wait. The issue of the whitening, और कमेंट में ये सेकंड पॉइंट है, the issue of the whitening divide
between Hindi and Urdu preoccupied Premchand in the last year of his life. He lamented the fact that Hindi has come to be identified as the language of Hindus and Urdu of Muslims, and that each community had turned its back on the language of the other. So strongly did he feel about the issue that it made the travel shy writer go to various places and plead for bridging the gulf between the two languages. मतलब इतने शाय थे वो राइटर, लेकिन उन्होंने फिर भी इस हिंदी और उर्दू को पास लाने के लिए उन्होंने ट्रैवल किया और वो कई जगहों पे गए. लाहौर में वो लाहौर भी गए. एट लाहौर ही सेट, it is necessary for both the sections among ourselves to learn both the scripts and both the languages. When we can sacrifice 15 years of our life in acquiring English, can't we spend even a month or two on learning a script and a literature on which may depend not only the progress of our nation but its very existence? ये शब्द थे प्रेमचंद जी के जब वो लाहौर गए थे. Okay, now wise words these, but unlikely to have much effect them as now. Then as now, the proceedings of Bharatiya Sahitya Parishad presided over by Gandhiji at Nagpur in 1936 highlighted another facet of Premchand's personality. The courage of his convictions. ये जो है ना courage of his conviction means ये इनकी extraordinary वाले क्वेश्चन में डाला जा सकता है. Gandhiji has proposed that Hindi or Hindustani be the medium of its proceedings, but the use of the word Hindi was an anathema to Urdu writers. Anathema होता है मतलब repellent to Urdu writers, though no one was prepared to come out openly against गांधी जी. मतलब उर्दू राइटर्स को बहुत बुरा लगा जब गांधी जी ने ये बोला कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो यूज़ होगी तो उनको, लेकिन वो ओपनली उनके गांधी जी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे. मुस्लिम जो राइटर्स थे ना वो उर्दू राइटर्स जो थे. Premchand then stood up and made a strong and passionate speech in favor of using Hindustani as the medium of the work of the Parishad. His stand may have made him unpopular with हिंदी वालास. अच्छा, हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो उसमें उर्दू यूज़ होती है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बोलने से, क्योंकि गांधी जी ने बोला कि हिंदी यूज़ होगी, उन्होंने बोला नहीं हिंदुस्तानी यूज़ होगी. His stand may have made him unpopular with Hindi walas, but he held on to that position till the end. This chapter presents Premchand as the peacemaker between Hindi and Urdu, a task which was very dear to him but at which he failed. Now comments में तीसरा point है, the chapter ends with Premchand writing to his young writer friend Janendra Kumar about his newly published novel Godan. He asks him to write an article on it if he likes it, but if you don't like it, just write to me and don't write the article. Amrit Rai's comment is brief and apt. Apt means correct. What an extraordinary man. तो यही जो आंसर्स जो हम पढ़ रहे थे ना कि एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन है, कॉमनर एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन. ठीक है. Now fourth point है, the chapter close on a somber note with a sentence that has a double meaning. Okay, now we have finished unit 1. आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं. मैंने MEG 14 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है. So thank you so much. Please subscribe my channel. Thank you.